Assalamu alaikum. Welcome to the fourth lecture of Digital Logic Design. I am Dr. Khurram Naveed, and I'm going to deliver this lecture that involves design of 4-bit binary adder subtractor. इस लेक्चर की खास बात यह है कि इस लेक्चर में हम स्मॉलर लॉजिकल सर्किट्स को या लॉजिकल सर्किट मॉड्यूल्स को कंबाइन करके we will try to make a bigger logical circuit instead of following the steps that we are going to follow those steps, but we will follow those steps to make smaller modules of for say let's for say half addition, and then we will use those smaller modules to make um, bigger circuits that will lead to 4-bit binary adder subtractor, right? So let's begin with the lecture. Let's begin with an example. So, suppose we are adding these two binary numbers. So here in binary addition, we add the corresponding bits. So when we add this 1 into 0, we get sum 1. And when we add this 1 into 1, the sum is 2. So 2's binary is 1, 0, where 0 is the 1's digit and 1 is the 2's digit, right? So so this means this one carries forward to the next addition here, and this 0 comes here as the sum. Okay, and when we add this 1 with these two zeros, the sum is 1, and when we add these two ones, the sum is again 1 0, and similarly we keep 0 here and the 1 comes here. So here, since the two bits are 0 0, this carry comes directly to the sum, and it becomes a part of it. It becomes its fifth bit. So here there is it means that we will have in a 4-bit binary addition, we may have an answer that comprises of 5 bits. And secondly, there is another input that apart from the two numbers, there is another input that is the carries in each 1-bit addition, and where there is no carry, it means the carry is 0. So it means that there are 3 inputs instead of 2, and so let's take a generic case. Suppose this number is A and this number is B, and let's say this number composed of that comprises of the carries from all additions, let's say it's C. Then this 4-bit binary addition can be represented in a generic way using these symbols. Right. So let's say the sum from this particular addition is S0, and there is going to be a carry which might be 0 or 1. So let's say it is, let's assign a symbol to it, and let's call it C out, or the output carry at the location 0, C out 0, right? And here the sum is going to be, let's say it is S1, and let's say the carry at this location is C out 1. And by following this convention, let's say this is S2 and this is C out 2, and this is S3 and this is C out 3, right? So since the carry in the previous addition, carry out from the previous addition carries forward to the next addition, this means the C out 3 will carry forward to the next bit, or the next a bit which is absent here. So let's say this is 0 0, and this C out 3 goes here, and let's call it C4.
So, and then this C4 also becomes part of the sum, right? So it tells us that the 4-bit addition might have an answer in 5 bits. Right, and it has a third input that is comprises on the carries from the previous edition. Which means this C0, this C0 is will be 0 no matter what, and C1 will be equal to C out 1, C2 will be equal to C out 2. That is because the C out 0, sorry, this will be C out 0 and this will be C out 1. So what it means is that the C out 0 will carry forward to the next addition, right? So this means the C1 is actually C out 0, and the C out 1 will carry forward to the next addition, and it means C out C2 is nothing but C out 1, and similarly C3 is nothing but C out 2, and C4 is nothing but C out 3. Similar, so let's write this. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 4 बिट एडिशन करनी है तो उससे पहले हमें ये जो 1 बिट एडिशन है ये इसके लिए लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है, क्योंकि अगर हम इस 1 बिट एडिशन के लिए लॉजिकल सर्किट डिजाइन कर लेते हैं then we can easily extend it to perform 4-bit binary addition, because effectively this thing is repeating 4 times, right? As you can see, right? तो जो हमारा पहला टास्क है वो ये है कि हमने we have to design a 1-bit adder, and by 1-bit adder I mean addition of 2 bits that results in a 1-bit sum, right? So suppose we are adding a plus b. So this is let's drop the scripts. हम जो ये a0 b0 a1 b1 है इसको हम फिलहाल भूल जाते हैं. हम 2 बाइनरी डिजिट्स हैं, ये 1 a1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और b भी 1 0 दोनों हो सकते हैं. तो इन 2 बिट्स को हम ऐड करना चाहते हैं, और हमें पता है कि जब भी हम 2 बिट्स को ऐड करते हैं तो उसमें एक तीसरी बिट होती है, that is the carry, and it can also have both possibilities of 1 0, right? तो इसका मतलब है कि when we are adding 2 bits we are actually adding 3 bits, and that is because this carry from the previous addition comes as an input in the next addition, right? तो इस पर्टिकुलर एडिशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं by dividing this into two small steps. Like first we add this a and b, so say this results in a plus b is equal to s1. Let's say this is some interim sum between a and b, and then we add c into this the sum of the ab to get the final sum s, right? और इसी तरीके से जब हम ये सम ले रहे हैं तो ओके, सो इसका मतलब है कि हम अगर इस पूरे प्रोसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 2 स्मॉल एडिशंस में डिवाइड कर दें, दिस वन
and this one, then we will simplify our task of designing a 1 bit adder even further. ठीक है, और इसको जब हम तो इसका मतलब है कि हमें 3 इनपुट्स की एडिशन की बजाय 2 इनपुट्स की एडिशन पे अभी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर हम ये चीज डिजाइन कर लेते हैं या ये इसके लिए सर्किट बना लेते हैं तो फिर इसी की सर्किट को एक्सटेंड करके हम ये वाली एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो let's design a circuit for this. So circuit डिजाइन करने का जो प्रोसीजर है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हम नंबर ऑफ इनपुट्स स्पेसिफाई करते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर हम ये वाला जो एडिशन है इसके लिए सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें 2 इनपुट्स हैं और अभी फिलहाल देखने के लिए एक ही आउटपुट रख लेते हैं। इसको हम S कह देते हैं इन दिस केस, और 2 इनपुट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो गई कि 0 0 में ऐड हो सकता है तो सम 0 होगा, 0 1 में ऐड हो सकता है तो सम 1 होगा, 1 0 में ऐड हो सकता है तो सम 1 होगा, और एक केस ये भी हो सकता है कि दोनों A और B 1 हो तो इसका मतलब है 1 1 में ऐड होगा और इस केस में आपके पास सम 0 होगा। लेकिन एक क्योंकि 1 + 1 2 होते हैं और 2 का बाइनरी 1 0 होता है तो 0 तो यहाँ आ जाएगा सम के लिए, और ये जो 1 है क्योंकि इसका वेट 0 से ट्वाइस है सो दिस विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एडिशन। सो इसके लिए हमें एक और आउटपुट चाहिए होगी जिसको हम कैरी कहते हैं या सी आउट, कैरी आउट कहते हैं। सही है, तो ये कैरी आउट इस पर्टिकुलर एडिशन के लिए 1 होगा जबकि प्रीवियस एडिशंस के लिए इट विल बी 0, right? So based on this truth table, we can easily find an expression for sum of 2 um, bit addition, which we term half addition. Why half addition? Because so we have effectively divided a full addition. This is a full addition, full 1-bit addition. Let's write the terms correctly. दिस इज अ फुल 1-bit एडिशन, और इसमें हमने इसको क्योंकि इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक ये वाला हिस्सा और दूसरे वाला हिस्सा ये। सो दिस इज व्हाई दिस पर्टिकुलर एडिशन जिसको मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, ये एडिशन जो है इट्स कॉल्ड हाफ एडिशन। सही है, तो इसका जो सम होगा या एस कहें सम की जगह, सो यहाँ पे जो एस है दैट इज इक्वल टू ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट, राइट। और इसी तरीके से जो कैरी है सी आउट, उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगी इट विल बी लेट्स टेक दिस, ये जो मिन टर्म है क्योंकि ऑन है इस पे और 1 है सी आउट, तो जो इसकी एक्सप्रेशन होगी इट वुड बी सी आउट इज इक्वल टू ए बी, राइट। तो अब इसको अगर आप गौर से देखें तो दिस इज नथिंग बट दिस is nothing but A XOR B, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सम है दैट इसका सम और कैरी का जो सर्किट है वी कैन इजीली ड्रॉ फॉर अ हाफ एडिशन, वी कैन इजीली ड्रॉ सर्किट फॉर half addition where the sum can be obtained by using the XOR gate, and the carry can be obtained using the AND gate between the 2 bits, right? Right. So this is the C out, right? So this is a 2-bit, or rather a half addition of a half 1-bit addition, in fact. So now let's go ahead and try to extend this idea to this circuit
to make a full bit adder. Okay, so up till now we have divided the full addition into two half additions, and then we also found out or we have also already designed a circuit for half addition. So now we will extend this half addition circuit to make a full addition circuit, or a full adder for that matter. So a full adder, as you can see here, should have two half adders, right? So this is a half adder that I have already drawn here. So let's extend it to uh, full addition, and in order to do that, we will need another um, half adder. So let's draw another half adder here. Uh, so in half adder, we get the sum using an XOR gate and the carry using the AND gate. So this is just the repeat of um, uh, the previous circuit. Okay, so यहाँ पे अब now how are we going to connect this? This is important now. So the sum of the previous half addition, that is S1 S dash, is going to be the input of the next half addition, right? So this means this S dash will be directly fed uh, to the sum of the next half addition, and the third, and then the other input to this sum would be the carry, the C. So that, let's write a C here. That's a third input. Uh, then we feed it uh, to the XOR gate. Now this will give us the sum S, right? So this is straightforward. Now comes the tricky part. Okay, so again the carry in this case will have one input that is going to come from here, राइट क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें जो दोनों इनपुट्स हैं एक्सॉर की, वही दोनों इनपुट होंगी एंड की. तो यहाँ पे भी जो एस डैश है वो एंड गेट की भी इनपुट होगी, क्योंकि यही इनपुट आपकी सम की इनपुट है. जो सम की दोनों इनपुट्स हैं वो कैरी की भी इनपुट होंगी. तो यहाँ से ये जो दूसरी इनपुट है ये यहाँ से यूँ आ जाएगी. सही. इसका मतलब है कि हमारे पास दो कैरीज हैं, और यहाँ इस केस में जो कैरी है इसका नाम, इसको हम कह देते हैं सी आउट 2, क्योंकि हमारे पास अब दो हाफ एडिशंस हैं और दो ही कैरीज हैं इन ईच केस. सो अब ये देखना है कि हमने इन कैरीज को कैसे कनेक्ट करना है. सो दिस इज द ट्रिकी पार्ट, और इसको समझने के लिए मैं आपके सामने दो तीन ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ. लेट्स से आई हैव टू ऐड 1 into 0 and say 0 is the carry. See, this is C, this is B, and this is A, right? और मैं कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ ताकि आगे हमें कुछ अगर परफॉर्म करना पड़े. तो 1 plus 0 जो है that is going to be the sum here is going to be 1. ठीक है, तो इसमें कोई कैरी नहीं है, और इसके अंदर जब हम 0 ऐड करेंगे तो we get the C out here in this case is this is S, and C out यहाँ पे इस एडिशन से C out 0 है, इसको हम C out 1 कह रहे हैं. और इस एडिशन से जो तो कि अगली एडिशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसको कह लेते हैं अगली एडिशन, और इस एडिशन से आपके पास जो सम है वो 1 आएगा. S ये S डैश है, और ये S जो है वो 1 हो जाएगा, लेकिन जो C out 2 है वो 0 रहेगा, राइट? तो इस चीज को हम एक्सटेंड, अब हम लेट्स चेंज द एग्जांपल. इसका मतलब है कि अगर दोनों कैरी 0 हो तो आउटपुट कैरी भी 0 होनी चाहिए. और दूसरा केस ये हो सकता है कि वी नाउ हैव अ सिचुएशन वेयर वी हैव से 1 हियर. अगर यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो सम है वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा. इट वुड बी 0. कैरी क्या हो जाएगी? इट विल बी 1.
तो अगर सम 0 है तो उसमें अगर कैरी आप ऐड करते हैं 0, तो दूसरी कैरी जो होगी वो 0 ही रहेगी, और सम जो है इट विल जो सम है इट विल आल्सो बी 0 इन दिस केस। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर यहाँ पे कैरी है तो यहाँ पे C2 में दूसरी जो कैरी है Cout2 वो 0 होगी, राइट। और इसी तरीके से लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जहाँ पे आपके पास यहाँ पे 0 रहता है, लेकिन जो कैरी है वो यहाँ पे सॉरी जो जो थर्ड इनपुट है वो 1 हो जाती है, और यहाँ पे जब 1 होगा तो यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पे सो व्हेन वी ऐड दिस 1 into 0 the sum here this the third input is going to be 1, और जो कैरी है it is going to be 0, राइट। और जब सम 1 है और यहाँ पे ये इनपुट 1 है, ये जो इनपुट हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपके पास सम जो है वो 0 ही रहेगा, लेकिन जो कैरी है वो 1 हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट अगर दोबारा आप इफ यू नोट इट कि यहाँ पे जब कैरी Cout1 होता है कैरी, तो Cout1 जो है Cout2 जब 1 होता है तो Cout1 जो है वो आपके पास 0 हो जाता है। और इसके अलावा जो तीसरी और जो लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है इनपुट्स की, वो ये हो सकती है कि तीनों इनपुट्स 1 हो, ठीक है। जब तीनों इनपुट्स 1 होंगी तो उसके उस टाइम पे आपके पास S डैश जो है वो 0 होगा, और Cout1 जो है वो इट विल बी 1, और Cout1 जब 1 है और तो जो जो इस एडिशन का जो सम है इट इज इट इज 1, और यहाँ पे जो Cout2 है इट विल बी 0, राइट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपके पास एक कैरी प्रेजेंट होता है, हमने सारे पॉसिबल सिनारियोज देख लिए हैं। जब आप 3 बिट्स में जब आपके पास Cout1 होता है तो Cout2 0 होता है, और अगर Cout2 1 होता है तो Cout1 0 होता है, और अगर या तो फिर दोनों 0 होते हैं। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके पास दोनों केसेस में Cout1 भी 1 आ रहा हो और Cout2 भी 1 आ रहा हो, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका कैरी Cout1 से कैरी आएगा तो Cout2 से कैरी नहीं आएगा, तो जो कैरी Cout1 होगा वही आपका कैरी होगा, और जो जब आपका Cout2 से कैरी आएगा, कैरी आने का मतलब क्या है कि जब कैरी 1 होगा तो इसका मतलब है Cout1 0 होगा, तो जो Cout2 का कैरी है वो आगे कैरी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों में से जो भी आउटपुट 1 है वो आपके पास कैरी बन जाएगी, ठीक है। और ऐसी क्योंकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है हमें इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये कैरी 1 है और ये कि दोनों कैरी 1 हो जाते हैं, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो इसका मतलब है वी कैन जस्ट अटैच एन और गेट दैट will carry forward the whichever carry is present। अगर Cout1 1 है तो यहाँ पे आउटपुट 1 हो जाएगी, कैरी आपका आगे चला जाएगा, क्योंकि इट इज गिवन कि Cout1 अगर 1 है तो Cout2 विल बी 0, और अगर Cout2 1 है तो Cout1 विल बी 0, और या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये है जिसमें कि अगर आपका Cout1 और Cout2 दोनों 0 हैं तो आपके पास कैरी आउट जो है वो 0 हो जाएगा, सही है। So this is a full adder that we have learned to make using by combining two half adders, right? So if I make a block diagram, suppose this is a half adder and it has a carry, two inputs A, B, a sum, it gives an output sum and a carry C out. So and suppose this is another HA half adder, right? And it also has two inputs. Say this is the connected, this output of this first half adder
will be the input of the next half adder, and then there is third input C, that is the carry from previous addition. और जो आपके पास इनफैक्ट और यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आ जाएगी दिस विल बी द सम, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगी दिस विल बी सी आउट 2, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों, क्योंकि दोनों हाफ एडर्स आपको कैरी दे रहे हैं, तो इनको कंबाइन करने का तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे एक और गेट, सॉरी सम प्रॉब्लम, ये आपके हाफ एडर की कैरी होगी, ठीक है। सॉरी फुल एडर की कैरी होगी, सही है। सो इसको अगर मैं साफ करके रीड्रॉ करता हूँ तो ज़्यादा मेरे ख्याल से विल बी यूजफुल फॉर अस। इसको अगर मैं सी आउट लिखता हूँ तो बिकॉज, ठीक है, ओके। और ये सो नाउ दिस इज हाउ वी मेक a full adder using by combining two half adders। और ये जो बॉक्स है, so this is, let's enclose this in a box and let's call it a full adder, ठीक है। और इस full adder की दो आउटपुट्स हैं, एक सी आउट और एक एस, और 3 इनपुट्स हैं, राइट। so this is how we can combine two half adders to make a full adder. Next we will look into how we can combine this 4 full adders to make one 4-bit adder. Okay, so before going to the 4-bit binary adder subtractor, let's write a structural level code to implement the full adder using two half adders. So इसके लिए हमें पहले हाफ एडर के लिए एक को मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, और उसको फिर हम फुल एडर के अंदर फुल एडर के मॉड्यूल के अंदर यूज कर सकते हैं एज ए कमांड। तो इसके लिए लेट्स राइट द हाफ एडर मॉड्यूल फर्स्ट। so we do that by using the module command, and then we write the name, let's name it HA half adder। और इसकी जो इनपुट्स होंगी वो इनपुट्स और आउटपुट्स यहाँ पे लिखते हैं, तो आउटपुट एस और सी आउट, और इनपुट्स जो हैं वो इसके अंदर दो होती हैं हाफ एडर के अंदर, ए और बी, ठीक है, और सेमीकोलन, ठीक है। फिर हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं विच वन ऑफ दीज आर इनपुट्स, और इनपुट क्या है इनमें से, ए और बी, और विच वन ऑफ दीज आर आउटपुट्स, और आउटपुट इसमें से है एस और सी आउट, ठीक है। फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल लेवल में वी आर गिवन द कमांड्स फॉर ईच गेट, एंड देन यूजिंग दोज कमांड्स वी कैन यूज दोज गेट्स। तो हमें हाफ एडर के अंदर हमें एक एक्सॉर गेट चाहिए होता है और दूसरा एंड गेट चाहिए होता है, ए बी, और यहाँ पे ये सम होता है, ये कैरी होता है। सो ये मॉड्यूल हमने इस सर्किट के लिए हमने मॉड्यूल बनाना है। तो एक एक्सॉर हमें चाहिए, सो हम लिखते हैं एक्सॉर लेबल, लेट्स से L1। लेबल इसलिए ज़रूरी होता है कि हम एक्सॉर के कमांड को या किसी भी गेट को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो हर दफ़ा जब हम उस गेट को यूज़ करेंगे मल्टीपल टाइम्स,
So it is important for us to assign a label to each time we use it, just to differentiate it from the previous times it was used. Okay, so यहाँ पे आप XOR की जो इनपुट्स हैं वो A और B है, और जो आउटपुट है वो S है। सही है। सो इनपुट्स पहले बाद में आती हैं और आउटपुट पहले। ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स। और इसी तरीके से फिर हम एंड की कमांड यूज कर लेंगे। इसमें हम लेबल L2 यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे अब आपकी जो आउटपुट है कैरी आउट, सी आउट जो है वो आउटपुट होगी, और इनपुट्स जो हैं अगेन वही A और B रहेंगी। यहाँ से देखें, यहाँ से देखें तो A और B दोनों इनपुट है। ठीक है, और सेमीकोलन और इसके बाद एंड मॉड्यूल। ठीक है, तो हमारे पास ये एक हमने मॉड्यूल बना लिया है हाफ एडर का, और अब हम इस हाफ एडर के मॉड्यूल को, जिस तरह हम सी में फंक्शन बनाते थे सी लैंग्वेज में, और उस फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर एज ए कमांड यूज करते थे, इसी तरीके से इस मॉड्यूल को हम यूज कर सकते हैं एज ए कमांड, और मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम कर अगेन हम उसी तरीके से शुरू करते हैं। मॉड्यूल FA दैट इज फॉर फुल एडर, और इसमें भी दो ही आउटपुट्स होती हैं, सम S और C आउट, लेकिन इसमें इनपुट्स तीन होती हैं, A B एंड लेट्स से C। ठीक है, अब हम इनको स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसमें से इनपुट्स कौन सी हैं। इनपुट A B C और आउटपुट S and C out. ठीक है, and then we in this case we will also need some wires. So let's say S1 C out 1 C out 2, और वायर्स हम जो है वो वाली आउटपुट्स होती हैं जो इंटरम आउटपुट्स होती हैं, which are not the actual input and output of the system but are interim outputs of the gates used within the circuits, right? So जो अच्छा, तो अब जब हम ये हाफ एडिशन HA की जो कमांड है वो हम लेट्स कॉल इट, और इसका लेबल हम अगेन L1 रख देते हैं क्योंकि ये डिफरेंट मॉड्यूल है, तो वी कैन यूज L1 हियर अगेन। और L1 H हाफ एडर हमने कॉल कर लिया। इसकी जो इनपुट्स हैं वो हम भी कर देते हैं A और B, और जो इसकी आउटपुट है वो हम कर देते हैं S1 और C out 1। सही है, ये वाला काम हम अभी कर रहे हैं। ये आपका HA है, हाफ एडर है, इसकी दो इनपुट्स हैं A B, और एक आउटपुट है S1 और दूसरी आउटपुट है C out। ठीक है, तो ये हमने अभी बना लिया C out 1, सॉरी। और फिर हम दूसरा हाफ एडर कॉल कर लेते हैं इसी कमांड को दूसरी दफ़ा, और इसका लेबल हम डिफरेंट रख देते हैं L2। तो अब हम सम S1 को, जो कि इसका सम है, इसको ऐड कर देते हैं HA, तो जो इसका सम होगा C के साथ, तो उसको हम S कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो इनपुट्स हो जाएंगी वो एक तो S1 होगी, क्यों, जो कि प्रीवियस हाफ एडर की आउटपुट थी, और दूसरी C होगी। इसी तरह ही करते हैं हम प्रीवियस हाफ एडर के सम को C में ऐड करते हैं, और जो इसकी आउटपुट होगी वो एक्चुअली में S होगी, और दूसरी आउटपुट C आउट होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो कैरी है C आउट, इन दोनों में से कोई एक कैरी
अगर 1 है तो वो हम वही आपकी जो सिस्टम की कैरी बन जाती है, और अगर दोनों कैरी 0 हैं तो सिस्टम की कैरी 0 होती है। ओवरऑल फुल बिट एडर की फुल एडिशन की कैरी 0 होती है। और तो ये और तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया था, हमने एक और गेट लगाया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम और गेट यूज कर लेते हैं एक, और उसमें लेबल L3 यूज कर लेते हैं। और जो कैरी है, सी आउट है, जो एक्चुअल कैरी है फुल एडर की, वो और होगा, इट इज एन और ऑफ सी आउट 1 एंड सी आउट, ठीक है। ओके जी, so now you have so this is how we make a module, और फिर आप एस एंड में एंड मॉड्यूल, so that's it, right? So this is how we make uh, a full module for full bit addition। और ये जो आपके पास सर्किट है, इसका हम पहले ही नाम हम कर चुके हैं, ये फुल एडर है, फुल एडर। इस बॉक्स को एंड आगे हम इस बॉक्स फुल एडर को भी एक बॉक्स के तौर पे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। Let's go back to the initial part of the lecture where we um, looked into 4-bit binary addition, and then there we realized that a 4-bit binary addition requires 4 1-bit additions. And let me highlight these again using different colors. Right. So, and therefore we designed one bit of a 1-bit adder which we call a full adder. Now it's time to use that full adder multiple times to perform 4-bit addition, where each binary addition requires a carry in, or an input carry from the previous addition. So let's start with this design process. So suppose this is the first, this is a full adder that is adding the first 2 bits, A0 and B0, and so the carry to the first addition is always 0, C0 is always 0, and there are 2 outputs, S0 and the C out 0. Okay, and then in the next, to perform the next addition, we will use another full adder that has the input A1, B1, and it requires the third input, that is carry C1 or C in 1, the carry in for this adder. And the carry, as we've already drawn it here, the carry from the previous addition will go as an input carry to the next addition. So this means this C out 0 from the previous addition will be the input to the next binary 1-bit binary addition, and in this case you will get a sum S1 and a carry C out 1. Okay, and then to perform this the next addition of A2 and B2, we will use another full adder, and that has the third input, that is C2 or C into, that is carry in the
second or the addition in the second place, and then in this case the cout one from the previous addition will be the input to this adder, and in this case in this addition the output will be S2, and the carry out would be Cout 2. So I'm using the same symbols that I've already used here, right? Nothing different. I'm just um, um, just connecting the different full adders to make a 4-bit binary adder. So in this case, in the fourth full adder, we will add the bits A3 and B3, and here the Cout will be the input, that is C3, and we get output CS3, and the C4, since it if there is any carry C4, since it directly comes to the sum, so it will be part of the sum C4. So now this is your sum of the 4-bit adder, right? So this is how you make a 4-bit binary adder by connecting 4 full adders or 4 1-bit adders, right? So in the next, this is the end of the first part of this lecture. So in the next part, we will see how we can make a binary adder and subtractor at the same time. So an exercise that you can perform in this at the end of this lecture could be you could try to make a Verilog or write a Verilog code to connect 4 full adders to make a 4-bit binary adder.